समझदा कि जिहड़ी इस बजट की हाईलाइट सी वो तो यही है कि पिछले 2 सालों तो असी लगे हुए सी कि पंजाब दा जिहड़ा आर्थिक ढांचा है इनू मजबूत बुनियादां ते किवें खड़ा करिए, जिन्हों फिजिकल कंसोलीडेशन कहते हैं। दैट वाज ऑफ प्राइमरी इंपॉर्टेंस बिकॉज होर सारियां चीज़ां बेमायने है जे इफ द फिजिकल पोजिशन जिहड़ी है वो वीक है, इफ द नंबर्स रेवेन्यू डेफिसिट फिजिकल डेफिसिट एंड ऑल जे वो काबू तो बाहर है, जे थोड़ी डेट काबू तो बाहर है। और मैं इस गल का CM साहब का धन्यवाद करदा है और मैं रिकॉर्ड च भी लियाना चाहना कि पिछले 2 सालों च जो भी फाइनेंस ने एडवाइस दी मुख्यमंत्री नूं फाइल ते दी, एक वारी भी नहीं होया कि उन्होंने फाइल ते ओवरराइट किया जो फाइल। और वी हैड अ फ्री हैंड इन रनिंग द डिपार्टमेंट फॉर विच आई एम एक्चुअली थैंकफुल टू हिम एंड सो असी हुण उस स्थिति ते आ गए हैं जिथे कि साडे जिन्ने भी फाइनैंशियल इंडिकेटर्स है, चाहे वो शायद थोनू सर्कुलेट कर भी दिता है, वो हुण कंट्रोल चाहते जा रहे हैं। इस तो इलावा जिहड़ा सब तो जिहड़ा खुशी की गल है कि बड़े सालों बाद और ये ऑडिटेड AG दे ऑडिटेड रिजल्ट तो 17-18 दे आ चुके हैं। पहली बार होया कि पंजाब जिहड़ा है वो प्राइमरी सरप्लस चला गया एंड वो AG दे जिहड़े रिजल्ट है वो थोड़े सामने है। इस तरह ही जिहड़ी साडी इंटरेस्ट टू TRR है वो 16-17 24 सी, 17-18 28 रह गई, 18-19 23.17 ते ऐतकी ये 22.5 रह गई। जिहड़ी कमिटेड एक्सपेंसिस है, जिहड़ी कि कमिटेड एक्सपेंसिस एज अ परसेंटेज ऑफ TRR ये 87.82 सीगे। इन्हां नूं असी क्योंकि पहले साल तो 3200 करोड़ की जिहड़ी किश्त जाती है वो करके 91.97 रह गए सी, पर 18-19 दे विच 73.78 रह गए। ओके, so the committed expenses as a percentage of TRR we inherited it at 87.82. They went up to 91.97 on account of that last day 31,000 crore debt ਜਿਹੜੀ convert ਹੋ ਗਈ। Last year we managed to cap them at 73.78 और मैं अपनी पिछली बजट स्पीच च कहा सी कि जे परमात्मा नूं मंजूर होया तो we will bring it to 70. So इस साल दा जिहड़ा जे तुसी once you read the budget we have projected this committed expense as a percentage of TRR at 70.72. Debt as a percentage of GSDP inherited at 42. First year 41.51. Last year 40.96. And this year it's gone below 40. It's 39.74. So मैनू इस गल की खुशी है और मैनू लगता है कि सब तो जे कोई वड्डा इश्तिहार है पंजाब दे फाइनेंसिस दी तो आई थिंक दैट इज द प्रेस कॉन्फ्रेंस which the chairman of the 15th Finance Commission, Mr. N.K. Singh, held, where he actually praised Punjab's effort in trying to consolidate its trying to cut down on expenses, trying to cut down not only expenses but actually augmenting resources. So I think that would be in the appreciation of the 15th Finance Commission. I'm hopeful, और जिस तरह मेरी speech का हिस्सा सीगा कि first year the day we presented our first budget, we were faced with a revenue gap of 10,000 crores. We brought it down to 4,000 crores. And this year, we pegged it at 2,323 crores. So this gives me immense satisfaction कि
Punjab jehda hai, it is on a corrective path. And apart from that, we have been able to, if you go through the budget at glance, we have enhanced allocations to almost all departments, barring a few. We have also, in the last, since the last budget, जिवें और जिहड़ा ये 2323 दा गैप है, but for the 3000 crore बिजली सब्सिडी जिहड़ी कि मैं नहीं दे सकिया, वो कैरी फॉरवर्ड करनी पई. जे किते वो दित्ती हुंदी तां it would have been actually a balanced budget. But there was no way I wanted to hide that. So, 30 to 40, sir. हाँ जी, या सैकटरी साहब कहने जो 3200 ਦਾ ਇਹ ਨਾ ਬਲਾ ਨਾ ਚੁੰਬੜਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਸਰਪਲਸ ਚ ਹੋ ਗਏ ਸੀ. ਸੋ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦੇ I think ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ I'm happy ਕਿ the cut on petrol at 5 rupees and 1 rupee, I think the trade will shift back to Punjab. And as I said in my speech, we will take it up with Government of India. Chandigarh should not be undercutting Punjab's revenues or finances. I am very proud कि ये जड़ी 4800 करोड़ दी जड़ी drinking water, surface drinking water scheme है, जड़ी की World Bank ते ADB funded जा रही है, and hopefully we should be able to complete it in the next 2 to 2.5 years. And this is also a reminder to the entire press कि 3000 करोड़ जड़ा है, वो debt relief, farmer दी debt relief is part of the budget. So, ये जड़े government दे जड़े manifesto दे promises सीगे, those are also being dealt with. We have been able to pay our employees 6% DA. We have reduced significantly the number of days Punjab is in overdraft. ਜਿਹੜੀ 4 ਸਾਲ ਦੀ strategic action plan 2019 ਤੋਂ 23 ਦੀ ਹੈ, that all outcomes, budget outcomes will be monitored very closely. I think that will also make sure that a lot of expenditure which is taking place is actually productive. So I think the other big ticket would be the paddy straw management. So it's not just the government which has been successful, but there has been general awareness amongst the population of Punjab. So people are not resorting to, putting fire to their fields. But ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ 375 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਸਾਲ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਕਸੀਮ ਹੈ, ਉਹ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ. ਵੇਰਕਾ ਮੈਗਾ ਡੇਰੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ I think second phase ਉਹ ਐਤਕੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ. I am very happy with the drug management program which Government of Punjab has started. And ਜਿਹੜਾ three-pronged strategy है on supply reduction, harm reduction and demand reduction. And ਉਹਦੇ ਚ ਕਾਫੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲੀ ਹੈ. I think I will be the happiest man ਜੇ within the term of this 5 years, if the menace of drugs can be controlled in a very significant way. That would be a big feather in the cap of the Congress government, because Congress government was also responsible for the control of terrorism in Punjab. Both problems were not made by the Congress, but they were inherited. And if we can rid Punjab of the menace of drugs, in which we are, I think, well on the path of success. A general comment ki Congress governments generally give very responsible finances compared to the Akalis. Matlab, had it not been for the fact ki they picked up a loan of 2,000 crore from Puda to 2,000 crore le liya, inna ne Mandi board to kar liya, inna ne PI, for the next 5 years, all sources of revenue were actually escrowed. They had taken loans and inna ne banka nu girvi rakhte sige. I mean, no responsible government would leave
with that kind of a track record. And no responsible government would actually sign on a 31,000 crore long-term debt one day before it was to demit office. So most of the highlights actually, I'm going to circulate that. And as you told us, the petrol prices have been slashed by 5 rupees later. So how much VAT now it has been slashed? Sir, this is for the Department of Tax to work out how much VAT will be slashed. But starting midnight tonight, Punjab will fuel will be cheaper in terms of petrol by 5 rupees and diesel by 1 rupee. I think with 1 rupee, going down 1 rupee, Punjab will be the cheapest in diesel in North India. And as I said, in terms of petrol, we will take it up with Government of India कि Chandigarh should align up with Punjab now. So earlier issue was this, that it should be equal to the neighboring state. I think, देखो गल ये है कि why should any state try to take away the revenues of the other? And why should we be in some kind of a tax war? जो साडा हक है, वो सानू मिल जाए. जो उन्हां दा हक है. I hope so, ji. I'm very happy. So is your VAT, the slash VAT, now reflecting in the VAT receipts for 2019? Ji, if you look at the VAT receipts for the next year, we have not increased it. So this year we are supposed to get 6,300 crores, and we have maintained that at the same level because. Sir, with the cut, don't you think that's got the No, ji, but that will be made up by higher sales of diesel and petrol. So what the finance minister just said is that last year what we had budgeted for VAT was 6,333 crore rupees. Now, as you guys are aware that I'll mix the languages because I see सारे तरह the vernacular ਦੇ ਵੀ ਨੇ. So 10 ਤੋਂ 10.5% ਦੀ normal increase हर बार ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ है. So ਅਸੀਂ ਉਹ increase consumption ਨੂੰ ਨਹੀਂ taken ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ. And we have pegged it at 6,353 only. Plus, जिस तरह FM साहब ने किया हैगा कि with the reduction in prices, we do hope कि ਜਿਹੜੀ consumption दूसरी states चली गई सीगी, that will shift back to Punjab, so that shifting of the consumption back plus our normal increase in consumption would be able to take care of this. And hence, especially for this, if you would see the greater detail, बाकियां ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ the normal growth of GSTP we have factored in. That is something which is natural. But for this, we have pegged it at the same level. So we have taken into account कि जड़ा FM साहब ने आज announce किया हैगा, that will be taken care of by increased growth of in general of the economy and by increased consumption that will come back. सर मेरा एक सवाल है, FM साहब आपने जब ग्लोबली पेट्रोल डीजल का रेट बढ़ रहा है, तब आपने ऑब्वियसली कहा था कि मैं पैसे कम नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मुझे तनख्वाह देनी है. आपने ऑब्वियसली इस चीज को कहा मुझे तनख्वाह देनी है, मैं इसको कम नहीं कर सकता हूँ. आज सर मैं ये एक जनरल आदमी ये पूछना चाहता हूँ कि आज आपके पंजाब की इकोनॉमिकल पोजीशन, क्योंकि अगर मैं आपकी रिसिप्ट्स में भी जाऊंगा तो हर वो रिसिप्ट्स आपकी डाउन जा रही है, हर रिसिप्ट्स आपकी डाउन हुई है, आपने उसको संशोधित किया है. तो आज पंजाब के पास कौन सा ऐसा वो हुआ है कि आपने 5 रुपए पेट्रोल को कम किया है? सब ऐसे है कि पिछले 5 साल से पंजाब का जो पेट्रोल का ट्रेड है वो स्टैटिक था. 15 साल से स्टैटिक था. तो अगर हमने पंजाब के ट्रेड को बढ़ावा देना है तो ये लाजमी हो गया है. और मैं इस काबिल हो गया हूं क्योंकि मुझे इन दीज 3-4 मंथ्स मुझे जितने भी बॉर्डर के पंप्स हैं उनकी पंजाब बॉर्डर इज 25% ऑफ द स्टेट because we are bordered with Himachal, Haryana, Jammu Kashmir, Chandigarh, Rajasthan. अगर पंजाब का देखो, because it's such a small state, तो हमारे पेट्रोल सेल्स मुतासिर हो रही थी. अब ये टाइम आ गया है जब हमें थोड़ा सा हमारे रेवेन्यूज में हमें थोड़ी सी ईज मिल गई है, हमें ब्रीदिंग स्पेस मिल गई है, हमारे फाइनेंशियल इंडिकेटर्स बेटर हो गए हैं, हमारी रेवेन्यू रिसीट्स में इजाफा हो रहा है. एंड मैं ये रिस्क ले सकता हूं कि मैं अपने 5 रुपए कम कर दूं.
ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦੇਖੋ ਸ਼ਰਾਬ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰੈਂਕੋ ਭਰ ਗਿਆ ਮਾਈਨਿੰਗ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸਾ ਵਧਾ ਸਕਦੇ Mining project is first. Mining High Court. New excise policy is coming, sir. सब ऐसे है कि माइन ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਨਿਊ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਉਹ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਕੀ ਹੋਏਗੀ ਮੈਂ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਬਟ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ 'ਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਇਮਕਾਨ ਹੈ ਸੋ ਆਈ ਐਮ ਨਾਟ ਰੀਅਲੀ ਵਰੀਡ ਕਿ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਕੱਟਣਗੇ ਔਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਸਟੇ ਹੈ ਸਾਡੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਔਰ ਆਈ ਹੈਵ ਫੈਕਟਰਡ ਦੈਟ ਇਨ ਐਜ਼ ਵੈਲ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਚੋਂ 300-400 ਕਰੋੜ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇੱਕ ਰੁਪਇਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਉਹ ਆ ਜਾਏਗਾ ਮੈਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਹੈ ਮੈਂ ਮੁਤਮਈਨ ਹੈ ਆਈ ਐਮ ਨਾਟ ਅ ਰਿਸਕ ਟੇਕਰ ਬਟ ਆਈ ਨੋ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਆਈ ਵਿਲ ਬੀ ਏਬਲ ਟੂ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਸਾਲ ਆਏਗਾ ਆਈ ਵਿਲ ਬੀ ਏਬਲ ਟੂ ਬੈਲੈਂਸ ਮਾਈ ਅਕਾਊਂਟਸ As I said, with better fiscal management, or maybe I'll be able to cut down on expenses. जी. Debt increase करना था part of Keynesian economics. So debt का increase होएगा ना जी, but that doesn't mean कि why should Punjab's economy be the most expensive economy? No, why should Punjab ਦੇ ਲੋਕ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਕਸ ਕਿਉਂ ਦੇਣ? ਸੋ GST ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ 14% ਇਨਕਰੀਜ਼ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਬਰੀਥਿੰਗ ਸਪੇਸ ਆ ਗਈ ਹੈ when I can actually reduce the rate of Sir, rates have gone down. GST rates have gone down for cold drinks, for hosiery, etc. ਜਿੰਨੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਗਿਣਾਈਆਂ ਨੇ ਜੀ ਆਈਟਮਸ ਇਹ ਵੈਟ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ GST 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਮੀ ਆ ਗਈ ਹੈ ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਦੇ ਹੈਵ ਗੋਨ ਡਾਊਨ ਬਟ ਹੈਵਿੰਗ ਸੈਡ ਦੈਟ ਅਗਲੇ 3 ਸਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਮਿਲਣੀ ਹੈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਵੀ ਵਿਲ ਡੀਲ ਵਿਦ ਦੈਟ ਐਜ਼ ਵੈਲ ਵੀ ਹੈਵ 6% DA ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਅਸੀਂ ਐਲਾਨ ਕਰਤੀ ਹੈ ਇਹ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਚ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਹੈ 1 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸਰ 1 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਯਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਰਚ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ DA ਲੱਗ ਕੇ ਆਊਗਾ ਸਰ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਬਜਟ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹੋ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਬਜਟ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਪੂਰੇ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਤਾਂ ਅਨਫੰਡਡ ਗੈਪ 2323 ਕਰੋੜ ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ we have put a provision of 50 crores tender ਜਿਹੜੇ ਆ already ਲੱਗ ਚੁੱਕੇ ਹੈ Department of Industry is in the process of identifying the L1 and these will be issued soon. Mr. Badal, one question. You are accusing the previous government of having very high RDs and FDs. In your own budget at a glance for 2017-18, the revenue deficit is 2.01 for the previous government when they exited power. Now your is 2.02. Your revised estimates and the budget estimates, there is a huge difference. Are you saying this deficit is wrong budget estimates, and we because it inherited. Majorly changing by about 8,000 crore in some cases. You must realize that the day the Akalis demitted office, that in one stroke, a debt of 31,000 crores was added, so we had to service an extra. That debt is showing in 2018-19. So that debt is showing after 2017-18. So is that debt not the reason why the revenue deficit and they shot up for 2 years and now they are down? Carry forward of 7,800 crores liabilities. ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਕਾਲੀ ਗਏ ਹੈ they had unpaid liabilities of 7,800 crores in the treasury. So ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਾ ਲਏ ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਾ ਲਏ ਗੁਰਿੰਦਰ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਾ ਲਏ
सब तो काम करा ले पर वो बिल नहीं दे के गए. So not only did we have to pay up that 7,000 crores, and also we were burdened with another 3,200 crores. So you have to see my budget today in the light of what I inherited and किस किस्म दे हालात सीगे. There is no additional. Cabinet has to decide collectively. I think this is a decision which collectively the cabinet has to debate on, and not just me. Sitni. You have in this kind of sense that you document evidence that proves that the government of India was willing to apportion the burden between itself and the banks. This is that 31,000 crores. What can you do? There was a non-paper which was circulated by email IC email IC PMO ਤੋਂ ਕਿ ਔਰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਡੈਟ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, they were having meetings and that we will be happy to apportion it 1/3, 1/3, 1/3. 1/3 bank, 1/3 government of India, 1/3 government of Punjab. Sir, I don't remember offhand, but when we went to government of India for 6-7 months, we were not aware of this email, but we found it in our records at some point of time. ਅਸੀਂ ਉਹ government of India ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ LK Jha committee ਬਣੀ ਸੀਗੀ, and they have acknowledged it. So what I'm really hopeful about is कि 15th Finance Commission has actually taken a very serious note of this. Can I complete? जिन्ना थोनू पुछण दा चाह उन्ना मैनू दसण दा चाह भी है. So ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਮੇਸ਼ ਚੰਦ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, 6 ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਵਕਫਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਔਰ 6 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ they will have to come up with some credible solution for Punjab. Otherwise, why should Punjab be burdened with the entire 31,000? So I'm very hopeful for that. There is projection of 20%, more than 20% growth in GST. So how it will be? नहीं जी, 14%. नहीं सर. Projection your figures. नहीं जी, 14% से ऊपर नहीं जा सकते. सर वो जो हमने OTR से उसमें लिया ना जी, ग्रांटिंग टू सेंटर, वो जो सर यार एक्चुअली क्या हो गया कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपनी अकाउंट कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ने अपने अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस बदल दी हैं. तो जो कॉम्पनसेशन आती है स्टेट्स को, पहले उसको हम अपना ओन टैक्स रेवेन्यू गिन लेते थे. अब उन्होंने हमें बताया कि आप इसको ग्रांट इन एड में लो, यू शुड नॉट बी एबल टू, तो उसमें वो बढ़ गया है.